Yashodandana Brajaganarandana Jamunatira Vanantari Jamunatira Vanantari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shripad Paramahamsa Parivrajagachajasto Tarasatya Sri Samadhi His Divine Grace Shirabai Charanarvan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Swami BT Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namasarya Srila Haridas Thakur Ki Samavata Bhaktivinoda Ki Transcendental Book Distribution Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jaini Thai Gaura Timarandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Taksuranmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahadana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Praya Sabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Some echo. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, king of all Vedic knowledge, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Sri Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect.
Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Surabhyaya Namaha, Om Surabhyaya Namaha, Om Surabhyaya Namaha, Mukam karoti vasanam pangum nangayate girim yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to the Srimad Bhagavatam, reading from Canto number 1, chapter 2, Divinity and Divine Service, text number 21. Yes. आप सबका भागवत के कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 21। Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarva Samshaya Kshiyante Chasya Karmani Drista Evat Manishvare Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarva Samshaya Kshiyante Chasya Karmani Drista Evat Manishvare. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. This text 21 is the culmination of the last 5 verses we have been reading, so it is most important to hear. ये जो 5 श्लोक हैं इस अध्याय 2 में स्कंद 1 की, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। Yes. So the translation, thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. इस तरह से जो हृदय की जो गांठ है उस पे काट दिया जाता है। इस तरह से जितने भी हमारे कलमश हैं, अनर्थ हैं, वो सब हट जाते हैं, कट जाते हैं। The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. जो श्रृंखला है, कर्म बंधन की जो श्रृंखला है, वो तब कट जाती है जब हम ये देखते हैं कि आत्मा ही मालिक है। Purport. Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing oneself simultaneously. Seeing one's own self simultaneously. भगवान के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब है कि भगवान के अलावा खुद को भी एक साथ ही देखना, तब जाके वैज्ञानिक ज्ञान। As far as the identity of the living being as spirit self is concerned, there are a number of speculations and misgivings. जीवात्मा के
स्वरूप के बारे में अगर पूछा जाए तो दुनिया में तरह तरह की भ्रांतियां और मन से उपजे हुए ख्याल हैं. The materialist does not believe in the existence of the spirit self. भौतिकवादी व्यक्ति वो तो मानते ही नहीं है कि आत्मा होता है. And empiric philosophers believe in the impersonal feature of the whole spirit without individuality of the living beings. और जो जो सांख्य के जो ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, वो जो है भौतिक चीजों को ही मानते हैं कि इसमें होगा, इसमें जीवात्मा का अस्तित्व को मानते हैं. The transcendentalists affirm that the soul and the supersoul are two different identities. लेकिन दिव्य दार्शनिक जो हैं वो मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं. Qualitatively one, but quantitatively different. गुणात्मक रूप से, गुण रूप से एक, लेकिन परिमाण अमाउंट के रूप से अलग अलग होते हैं. There are many other theories, but all these different speculations are at once cleared off as soon as Sri Krishna is realized in truth by the process of Bhakti Yoga. बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारे तरीके हैं. लोग बोलते हैं कि भगवान है, भगवान नहीं है, बहुत सारे चीजें बोलते हैं. लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण को सत्य रूप में जान लेगा तो सारे के सारे जो अपने अटकलें हैं वो दूर हो जाएंगे. Sri Krishna is like the sun, and the materialistic speculations of the absolute truth are like the darkest midnight. भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भगवान सत्य के बारे में जो अटकलें हैं, जो सबकी भ्रांतियां हैं, जो लोग अपने मन से उपजे ख्याल दे रहे हैं, वो सारे ख्याल मिलके ऐसा है मानो कोई काला बादल हो, जिस काले बादल से सत्य का जो प्रकाश है जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा. Darkest midnight. डार्केस्ट मिडनाइट, वो एक काली घनी रात के समान है जिसमें कि सूर्य का प्रकाश नहीं आता. Yeah, means heavy Maya, heaviest Maya. इसका मतलब है कि बहुत ही गहरी, बहुत ही गंभीर और बहुत ही हेवी माया, मतलब Therefore, भारी माया. Krishna Surya Sama Maya Hare Andhakar. कृष्ण जो है सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है. Where's that midnight? Yes. As soon as the Krishna sun, S-U-N, is arisen within one's heart, the darkness of materialistic speculations about the absolute truth and the living beings is at once cleared off. जैसे ही कृष्ण सूर्य का उदय हृदय में होता है, व्यक्ति के हृदय में होता है, जो अंधकार है, माया का अंधकार है, वो एट वंस एक ही झटके में वो दूर हो जाता है. In the presence of the sun, the darkness cannot stand. सूरज के सामने अंधेरा नहीं रह सकता. And the relative truths that were hidden within the dense darkness of ignorance become clearly manifested by the mercy of Krishna. और जो घने काले कोहरे अंधकार, अज्ञान के अंधकार के अंदर जो सत्य छिपा है वो एक झटके से प्रकट हो जाता है. That Krishna who is residing in everyone's heart as the super soul. कृष्ण जो सबके हृदय में रह रहे हैं वो परमात्मा है, वो तुरंत क्लियर हो जाता है, सबको स्पष्ट हो जाता है. In the Bhagavad Gita 10:11, the Lord says that in order to show special favor to his pure devotees, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु he personally eradicates the dense darkness of all misgivings. वो खुद स्वयं ही आके जो काला कोहरा है, जो जो अंधेरा है, उसको खुद स्वयं ही वो हटा के प्रकाशित कर देता है. By switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. शुद्ध ज्ञान जो है वो दे के उसके शुद्ध ज्ञान के स्विच को ऑन करके कृष्ण जो है उसके अंदर से अंधेरा हटा देते.
Therefore, because of the personality of Godhead's taking charge of illuminating the heart of his devotee, certainly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. क्योंकि भगवान स्वयं ही उसके जीवन में प्रकाश लाने चाहते हैं, इसलिए भक्त के जीवन में बिना ज्ञान के भक्त रह ही नहीं सकते. He comes to know everything of the absolute and the relative truths. वो भगवान के बारे में, जो परम सत्य के बारे में और सापेक्षिक सत्य के बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं. The devotee cannot remain in darkness. भक्त अंधेरे में कभी रह ही नहीं सकता. And because a devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. क्योंकि वो भगवान के द्वारा उसको ज्ञान मिला है, इसलिए ज्ञान भी जो है वो एकदम सही ज्ञान है. Prabhupada used to explain, I may not be perfect, but the knowledge I am giving you, because I am receiving it from the perfect source, that knowledge is perfect. प्रभुपाद जी कहते थे, मैं सही नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं जिस स्रोत से सुन के तुमको ज्ञान दे रहा हूँ वो एकदम सही जगह है. Yeah. तो इसलिए सही जगह से सुनने के कारण तुमको जो ज्ञान मिला वो भी सही है. Therefore, the importance, absolute importance and necessity of parampara. Parampara means simply transmitting, giving, presenting the original unadulterated knowledge as received from the original source. तो इसीलिए परंपरा जो है, परंपरा का महत्व समझ में आता है. परंपरा का मतलब है कि बिना ज्ञान को बिना मिलावट किए हुए प्रसारित करते रहना. So to continue here in the purport, this is not the case for those who speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. Yeah. This is not the case for those who speculate on the absolute truth. हाँ, ये फायदा उन लोगों को नहीं है जो लोग परम सत्य के बारे में अपने मानसिक अटकलों को लगाते रहते हैं. Yeah. By dint of their mental speculation. Imperfect. Perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge, coming down from the authority to the submissive oral receiver who is bona fide by service and surrender. परफेक्ट जो ज्ञान है, जो सिद्ध, जो सही जो ज्ञान है, वो परंपरा में आता है. और इसको सबमिसिव ओरल रिसेप्शन, जब हम नम्र होकर बैठ के सुनते हैं, तब हम उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं. So a very important point being made here in this sentence. One becomes bona fide as a receiver of this transcendental knowledge by two things: by service, by engaging in devotional service, and by fully surrendering. व्यक्ति जो है क्वालिफाइड, तब वो व्यक्ति जो है तब वो उस लेवल पे आ जाता है, योग्य हो जाता है, जब वो भक्ति की सेवा करता है और सरेंडर अपने को शरणागत कर देता है. Yes. तब नहीं तो बाकी लोग जो क्वालिफाइड नहीं, दो तरह की जो बातें हो रही है, तो मानसिक अटकल लगाने वाले और भक्त जो है सेवा करता है और सरेंडर करता है, और मानसिक अटकल लगाने वाले लगाते रहते हैं. Same instruction that Krishna is giving in the Bhagavad Gita, this verse we were quoting that everyone knows, that Vidhi Prani Pratina, that's in it. Seva must be there. Seva, service, is a practical demonstration or practical application of this knowledge we are receiving. सेवा जो है, जो हम करते हैं, हम जो भी कुछ सीखे हैं उसको हमको दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है. खाली नहीं कि सुन लिए सेवा करो. सेवा करना भी जरूरी है. Yes. One cannot challenge the authority of the Supreme and know him also at the same time. भगवान के अधिकार को, भगवान के परम सत्ता को कोई चुनौती देके उनको सीख नहीं सकता, उनके बारे में जान नहीं सकता. The Lord reserves the right of not being exposed
to such a challenging spirit of an insignificant spark of the whole. भगवान के पास ये एक अधिकार रहता है। क्या अधिकार रहता है कि ऐसे जो लल्लू पल्लू लोग जो चैलेंज कर रहे हैं, जो कि छोटा सा जुगनू के जैसे हैं जीवात्मा, तो जिसका इसका चैलेंज थोड़ी ना हर जाके दिखाएंगे कि तू चैलेंज करता है। जा मरो। A spark subjected to the control of illusory energy. एक छोटा सा चिंगारी ही तो है जीव, जिसको कि भौतिक माया जो है पकड़ के रखी। The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भगवान से ज्ञान ब्रह्मा को आता है, ब्रह्मा से फिर उनके शिष्य को आता है, और इस तरह से गुरु शिष्य की परंपरा में नीचे आता है। This process is helped by the super soul within such devotees. और इस तरह से जो इस प्रक्रिया में, परंपरा की प्रक्रिया में सभी भक्तों को परमात्मा से मदद मिलती है, जो इस सबके हृदय में है। We don't have to go very far to contact the Lord. बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं भगवान से मिलने के लिए। We don't, because the Lord has already made a temple within our heart. बहुत मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। Everyone is looking in so many places to find answers, but the answers are all within one's heart. इतने सारे उत्तर को यहाँ वहाँ लोग खोज रहे हैं, लेकिन सब कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही परमात्मा है। That is this parampara process. That is the perfect way of learning transcendental knowledge. यही सही रास्ता है दिव्य ज्ञान को सीखने का, परंपरा को सीखने। And the last paragraph quickly enables the devotee to distinguish spirit from matter. ये जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति जो है भौतिक और आध्यात्मिक उसको फर्क समझ पाता है। Yeah, and this is the heart of this verse here, because the knot of spirit and matter is untied by the Lord. क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की जो गांठ है उसको भगवान स्वयं ढीला कर देते हैं। Yeah, living entity, but the jeev, conditioned living entity, is that living entity who has become subjected to this strangling tight knot of the modes of material nature. बौद्ध जीव वो है जिसको भौतिक गांठें, भौतिक प्रकृति के गांठें उस पर जोर जोर से कसी हुई। Yes. This knot is called, what is this knot called? इस गांठ को क्या कहते हैं? One very important word. हृदय ग्रंथि। Gurukul, what is a hard knot? इस गांठ को क्या कहा जाता है? That is keeping us all in darkness, ignorance, therefore suffering. कौन सी? Huh? कौन सी? Yes. Ahankara. Ahankara. And it falsely obliges a living being to become identified with matter. और इस तरह से जीव जो है झूठ मूठ को अपने आप का भौतिक प्रकृति का बना हुआ समझने लगता है। As soon as this knot is loosened, therefore, all the clouds of doubt are at once cleared up. जैसे ये ग्रंथि ढीली पड़ती है, ये गांठ ढीली पड़ती है, भौतिक आनंद का जो बादल है फट जाता है। Yeah. It's like when it is rainy season, full of clouds, cannot see the sun. When the clouds dissipate, then we have darshan. जैसे कि बादल में भी सूर्य नहीं दिखता, बादल हटते ही सूर्य दिखने लगता है। Yeah. So all of us, we are, since time immemorial, filled with so many clouds. One sees his master himself in the transcendental loving service of the Lord. और अपने मालिक भगवान को देखता है और उनकी सेवा में वो लग जाता है। Yeah. As there are two masters within the body. शरीर में दो मालिक। There is the small master and the big master. छोटा और बड़ा। Yeah.
छोटा मालिक बड़ा मालिक, The small master is a living entity, छोटा मालिक जो जीवात्मा है, which is master of this. Either we are Godas or we are Goswami. दो ही तरह के लोग हैं, गोदास और गोस्वामी. Majority of people, those who are devoid of this transcendental knowledge, they are Godas, servants of their senses. जो इस दिव्य ज्ञान से अनजान है वो लोग गोदास लोग. Yeah. Those who are cultivating this knowledge, they become Goswami, master of their जो senses. ज्ञान उठा रहे हैं वो गोस्वामी. So just to finish off here, one sees his master, making a full termination of the chain of fruitive action. When we come to that position, we bring an end, fruitive reaction, which has been with us since time immemorial. जब हम गोदास होते हैं तो भौतिक कर्मों की श्रृंखला की जो कर्म फल है वो हमको लगने लगता है. In material existence, a living being creates his own chain of fruitive work and enjoys the good and bad effects of those actions life after life. और इस तरह से जो कर्म फल हैं वो अच्छे बुरे दो तरह के होते हैं और इसका फल वो जीवन के बाद, जिंदगी के बाद एक जन्म दो जन्म जन्मों जन्मों तक लेकर रहता है. Yeah, chain of fruitive action is like chain. If somebody is in prison, sometimes they're so uncontrollable they have to be put in chain. So that is our position when we are. जब आदमी कंट्रोल में नहीं होता तो कभी जेल में उसको चेन लगा देते हैं, वैसे चेन लगा हुआ रहता है, कड़ी लगा हुआ रहता है. Yeah, the very bad criminals are put in chain. बहुत ही बदमाश जो होते हैं उनको चेन डाल देते हैं. Then they can't move. तब वो जाके चेन के साथ हिल पाते हैं. Yeah, Duryodhana tried to put Krishna in chain. दुर्योधन ने कृष्ण को चेन लगाने का सोचा. Then he found himself in chain. तो उसको बाद में पता लगा कि उसको खुद ही चेन लगा हुआ. What happened? Yeah. But as soon as a living entity engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reaction. लेकिन जैसे व्यक्ति लविंग सर्विस प्रेममयी सेवा में लग जाता है वैसे ही इस चेन से, इस श्रृंखला से कट के निकल जाता है. Very important verse and very important purport, of course, as well. बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. We are forced to remain in this material world, and we will continue to be forced as long as we are having this connection with the modes of material nature. जब तक इस संसार में हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक हम इस भौतिक गुणों के साथ संबंध बना के रखेंगे. And that is a very, very deep and very tight bondage, as explained here, within the heart of all living entities. ये बहुत ही गहरा बंधन है जीवों के हृदय में लगा हुआ. Yes. And what is clearly being explained here is that there is only one process, there is only one way in which we can break this knot or untie this knot. एक ही तरीका जिससे ये गांठ खोल सकते हैं. Yeah. And that process is the process of bhakti yoga. भक्ति योग के तरीके से खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा. Because bhakti yoga revives our original transcendental nature and our original transcendental relationship with Krishna. भक्ति योग जो है हमारे दिव्य संबंध को कृष्ण से जोड़ देता है, इसलिए ये काम भक्ति योग कर सकता है. This is very nicely explained, of course, in the Bhagavad Gita. Karma, vikarma, and akarma. भगवद गीता में तीन चीज बताया गया, कर्म, कर्म, विकर्म. Yeah. Even what we call good people in the material world who perform so-called good activities, if they are not devotional activities, those good activities simply continue to bind them in the material world. जो दुनिया में अच्छे लोग हैं जो दिखाते हैं कि अच्छे हैं लेकिन उनकी जो अच्छाई है उनकी अच्छाई ही इस दुनिया में उनको घसीटेगी. Yes. So all so-called good activities or
bad activities, if they are not performed in relation to Krishna, they are binding us in the material world. तो अच्छी बुरी जो भी दो चीजें हैं, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो दुनिया में हमको फंसा देगी. Yes. So therefore, that is the unique, very unique position of this process of devotional service. ये भक्ति का बहुत दिव्य स्थिति है कि भक्ति इसको खोल पाती है इस बात को. Devotional service takes us completely on another level, on another dimension. भक्ति जो है हमको एक अलग ही स्तर पे, अलग ही आयाम में स्थित कर देती है. Just like the holy name, our acharyas explain, is simply not from this material world. आचार्य कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है इस दुनिया का है ही नहीं. Golokera Premadham Harinam Sankirtan. The holy name actually is descending from the spiritual world. आध्यात्मिक जगत से हरि नाम उतर के आए. Yes. And bhakti, devotional service, also is an activity of the spiritual world. भक्ति भी एक क्रियाकलाप है जो आध्यात्मिक जगत का है नहीं. So when we actually engage in bhakti activities and devotional service, we actually, by the mercy of Krishna, make or manifest that spiritual dimension within the material world. जब हम भक्ति करते हैं तो हम वो चीज जो आध्यात्मिक जगत की चीज है उसको यहाँ पे प्रकट करके लाते हैं. Yeah, so when we live in a temple or ashram or community of devotees, we are actually not living in the material world. जब हम भक्तों के साथ ऐसे साथ में रहते हैं तो हम एक्चुअली भौतिक दुनिया में रह ही नहीं रहे. Yeah, the consciousness is completely different from ordinary materialistic persons. ये जो चेतना है एक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति की चेतना से एकदम ही हटके. So these different instructions in the last few days have beginning actually with Srinvatam Swakata Krishna. Everything begins by hearing transcendental subject matters. हर चीज हमने पिछले 5 दिनों में जो श्लोक सुने हैं, 5 श्लोक, उसमें सब चीज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सुनने से. And what is nicely explained here also, Prabhupada is telling that this process of bhakti devotional service is so powerful that not only does it open the door, or not only does it allow us to understand about spiritual subject matters, but we can also understand about material subject matters, material nature. नहीं केवल न कि हम आध्यात्मिक बल्कि हम भौतिक चीजों के बारे में भी हम जान सकते हैं भक्ति के तरीके को अपनाते हैं. Yes. So this is where we want to arrive. This is where we want to go. We want to come to that position of being disconnected. Now we are tied up, completely bound up by these gunas, these modes of material nature. Guna means rope, tightly. अभी हम लोग गुणों में, भौतिक गुणों में बंधे हुए हैं और यहाँ से हमको पूरे जो है वो भक्ति के द्वारा जो है पूरे मुक्त अवस्था तक पहुँचना. Yes. So that is the meaning here when it mentions about seeing the self as master. यहाँ पे लिखा है कि अपने आप को मालिक देखो, इसका मतलब ये है. But seeing the self as master, we should not misunderstand. Doesn't mean that we are the supermaster. अपने आप को मालिक समझने मतलब नहीं कि हम लोग परम मालिक भगवान बन गए, ऐसा नहीं समझना. We are just like Bhagavad Gita also speaks about, Krishna explains about kshetra and kshetragya. क्षेत्रज्ञ हम चापी मामले. भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और इसके बारे में बताते हैं कि जो जीव है. We are all driving this little machine that we have called the body. हम छोटा सा गाड़ी चला रहे हैं शरीर. But we don't. So we are meant to be. ब्रह्मांड नहीं चला रहे हैं. We're meant to be master of this body, but there is a master of the driver of this machine. There's a master of the small master. हाँ, हम इस शरीर के छोटे मालिक हैं जो हम चला रहे छोटा गाड़ी. So that point also Prabhupada nicely explaining. Self-realization means two things. आत्म साक्षात्कार का मतलब दो चीज.
Self-realization means understanding our true self and understanding the origin of our true self, isn't it? मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है. That's also explained in the beginning of the 7th chapter of the Bhagavad Gita. Knowledge means the very point, same point made here, understanding the difference between matter and spirit. 7वें अध्याय भगवद गीता के शुरुआत में लिखा है कि ज्ञान का मतलब है भौतिक और आध्यात्मिक का फर्क समझना. Understanding the origin of both matter and spirit. और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का जो स्रोत है उसको समझना. And understanding the relationship between them. और उन तीनों के बीच में जो संबंध है वो समझना. And understanding what is meant to be the ultimate end result, the goal. What is meant to be the goal. और ये समझना कि हमारा परम लक्ष्य क्या है. And that, all of that is nicely summarized by Lord Chaitanya Mahaprabhu in 3 simple. और ये सब का सार चैतन्य महाप्रभु ने 3 सरल चीजों में बताया. That I'm sure you are learning here as part of the courses. Sambandha Gyan Abhideya Gyan. संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान. When one understands actually these 3 simple, we can say, processes, 3 aspects, then one can actually deal with any kind of situation. अगर ये 3 चीज पता है व्यक्ति को तो किसी भी स्थिति को आदमी हैंडल कर लेगा. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. Yes. Unfortunately, those 2 categories of persons mentioned in the purport, the materialistic karmis and the gyanis, they cannot come to that understanding. लेकिन जो भौतिकवादी जो ज्ञानी है इस स्तर तक संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे. Unless they come to that higher platform of transcendence. लेकिन जब तक वो ऊंचे स्तर पे नहीं आएंगे, एक आध्यात्मिक स्तर पे, एक भक्त के स्तर पे, तब तक वो लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन से कैसे उनके जीवन की सारी समस्याओं का हल हो सकता है. And that's only possible if we attend Bhagavatam class. और वो केवल तब हो सकता है जब हम भागवतम की कक्षा हम सुनेंगे. So any comments or questions on this? कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, मंतव्य, गंतव्य? Yes. Loudly, because you're very, very far away. And your voice is very low. You can stand up, your voice will carry more. Should not falsely imitate you. Anyway, what's your question? Okay, so if I understand correctly, you're mentioning that some of the examples we find in the Bhagavatam, like avadutas, what is that? Huh? Translation. Yeah, I'm sorry, yeah. प्रश्न है कि ऋषभ देव और अवधूत जो थे और जो बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जो लेटे रहते थे और उनको आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था. तो ये क्या है कि बीच का स्तर है वहाँ भक्ति के पहुँचने तक है कि ये भी एक तरीका है, लेट के भी ज्ञान होता है. So you're curious about the avadutas. Maharaj, you want to know that whether we can sleep and get self-realization. If that is the case, then that will be very nice. Yeah. One of the process. Shortcut. 10th process. 10th limbo bhakti. Do they consider themselves as Ishvara, or they go beyond it? He's asking whether we discussed that the self has to see as master. So are they also considering that we are the master, or they are just lying? It is that like appears that somebody else is master, and when he will take me to Godhead, I will go. I don't have to do anything. Something like that. Yeah.
No, not like that. We cannot so easily understand, and also we cannot imitate such state of consciousness. They are they are totally beyond this body conception. उनको हम नकल नहीं कर सकते, वो शरीर के स्तर से ऊपर उठे हुए लोग हैं. They are beyond the bodily conception, and they are fully immersed in transcendence. और आध्यात्मिकता में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं. Yeah. So they are so detached from their body that, like Avadut, like the example in the Bhagavatam, he will just not care about his body. अवधूत जो भागवतम में उदाहरण है, वो तो इतना आगे बढ़ गए कि उनको शरीर का ध्यान ही नहीं. But as soon as we hear that little sound in the morning here, everyone starts running for prasadam. यहाँ जब घंटी बजते ही सब लोग प्रसाद के दौड़ जाते हैं. So those are extremely rare instances that cannot, should not and cannot actually be imitated also. Maharaj is asking that when can I realize that I am on the same level? By continuing to attend Bhagavatam class. Our process is a gradual process. Maharaj, one more thing. Rishabdev is the Supreme Personality of Godhead, so he can do. Rishabdev is the Yes. Supreme. And that Avdut is also, I heard that he is the Dattatreya. So he is also the Supreme Personality of Godhead, so they can do. Yes, they are exceptional personalities, but any living entity can come to that level. जड़ Yeah. पर I mean, you know, Namacharya Haridas Thakur, he was on that platform, on that level. But that cannot be imitated. That's extremely rare also. So better we arise every day before 4 o'clock, 10 Mangalarti, 10 or 16 rounds, etc., etc. If Krishna allows, we may come. But actually, Prabhupada explains those who are on this very rare, high platform of Paramahamsa. This is Paramahamsa, we're talking about Paramahamsas. Because there are so many conditioned souls that are rotting in the material world, one comes down from that higher platform. But in Kali Yuga, we don't have to worry about coming down because we're... प्रश्न है कि ऋषभदेव और जो थे और अवधूत जो थे तो भगवान थे, इसलिए वो जो थे ऐसे लेट जाते थे. महाराज कह रहे नहीं, जीव भी उस स्तर पे पहुंच सकता है और वो जो है परमहंस स्थिति पे पहुंच सकता है जहाँ अवधूत के जैसे रह सकता है. दुनिया का कोई लेना देना नहीं, कहीं लेटा हुआ है. लेकिन कह रहे हैं कि दुनिया की हालत इतनी खराब है कि जो ऐसे परमहंस होते हैं वो उतर के नीचे वाले स्तर पे आके प्रचार करते हैं. और महाराज कह रहे हैं अंत में कि लेकिन कलयुग में ऑलरेडी हम बहुत नीचे हैं, तो और नीचे आने की जरूरत नहीं. Even in some rare exception, one might attain that. He won't go there. He'll remain on the preaching platform, Madhyamadikari platform. Preaching. अगर किसी का वो स्तर आ भी गया है तो उसको वो वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि वो नीचे वाले स्तर में प्रचार कर सकता है, वहाँ वाले स्तर में प्रचार नहीं कर सकता. Srila Prabhupada was on that platform. He was in Vrindavan, fully satisfied. Did not have to leave Vrindavan, but he left Vrindavan to preach. वृंदावन छोड़ के गए प्रचार करने के. Yeah, that is the mood and mentality in our sampradaya. The bodies are going out again? Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Gaura Premanande.